Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Ghazala Amin with PRM 702, Project Quality and Risk Management. और अब जो हम 17th lecture से शुरू कर रहे हैं Project Risk Management पढ़ाना, now it's quite near to the end. अब नज़दीक आता जा रहा है. Today ये वाला lecture और अगला जो lecture है, we'll really focus on the PMI's processes, ताकि for people who are really interested in pursuing PMP certification, they will actually get all of these processes in a nutshell. आप ये भी गौर कीजिएगा कि जितने ज़्यादा जो हमने पिछले processes की बात की थी, PMI also talks about the same path, same kind of processes. हमने बात की थी plan, identify, analyze and then reacting to a risk. जब हम देखेंगे तो PMI भी have almost the same processes. मगर with an eye on what PMBOK, the Project Management Body of Knowledge, has to say, हम लोग उसी वाली दूरबीन से इस वक्त देखेंगे and let's see what happens. With this, let's get started. All the best to you. The Project Risk Management, the reference study material would be the Guide to the Project Management Body of Knowledge, the PMBOK. It's the chapter 11, depending on which edition you are looking at. अगर आप 4th edition देख रहे हैं या हो सकता है ये थोड़ा सा change हो जाए 5th edition में, which is in the market right now. The study notes, obviously जो भी आपको presentation slides दी जा रही हैं इस वक्त, बहुत concise और precise information pull की गई है, just so that कि you have the enough relevant material to work with. अच्छा, डॉक्टर कर्जनर, हेरल्ड कर्जनर की जो किताब है जिसको मैंने शुरू में ही एज अ रेफरेंस मटेरियल बताया था आपको, उसका चैप्टर 17 है, फोकस ऑन दैट. बहुत इंपॉर्टेंट है. एक दो मैं एग्जांपल आपको दूंगी, वो भी उसी में से लिए गए हैं. तो इफ़ यू कैन नॉट सी थिंग्स वेरी प्रॉपरली और यू नीड टू गेट मोर ऑफ comprehensive information in this regard, then go ahead and read that chapter. That will really help you out. जब हम प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट नॉलेज एरिया की बात करते हैं तो व्हाट टू स्टडी, ये जो अब हम थोड़े टर्म एंड टर्मिनोलॉजीज आपके साथ शेयर करेंगे. दीज आर स्पेसिफिक थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन एंड यू नीड टू रियली रीड एंड अंडरस्टैंड दीज डेफिनेशंस. एक तो ये कि यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड नो व्हाट अ रिस्क इज, और सिर्फ ये नहीं कि वो anything that hasn't happened, that hasn't occurred या negative जिसके threats हों, मगर you have to understand what a risk is with the various qualifiers. Then you also need to know the 3 components of risk: the risk event, the probability of risk event, and then the impact of risk. जो चीज़ें हमने पिछले 2-3 lectures में बात की थी, the probability impact matrix, और जो कलर डिपिक्शन थी उसकी द रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स, विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट इज. हमने जो मैट्रिक्स या एक तरह का बनाया था, प्रोबेबिलिटी एक तरफ थी, द लाइकलीहुड एंड द कॉन्सिक्वेंसेज एंड द इम्पैक्ट ऊपर जो थे, और उनका कॉम्बिनेशन 1 through 4 ले लें, 1 through 5 ले लें, जो भी करें. द की इज टू बी कंसिस्टेंट. इफ वन इज कैटास्ट्रॉफिक in one of your projects, then across your organization one needs to be the urgent. ये नहीं कि अब अगले project में आपने 5 को catastrophic बना दिया और 1 will be rare या unlikely event. ठीक है? So what you need to do is to define this and be consistent with it. The risk assessments using decision tree and the expected monetary value. These are things that I have not talked about so far. तो ये एक अच्छा टाइम होगा इस लेक्चर में. और अगेन योर रेफरेंस मटेरियल, इफ़ यू वांट टू गो बैक, लुक एट द हेरल्ड कर्जनर की किताब देख लें. कोई भी एडिशन होगा, आई एम श्योर यू विल फाइंड इट, बट डू स्टार्ट फ्रॉम प्रॉबेबली द 7th और द 8th एडिशन. अभी इस वक्त मार्केट में 11th या 12th एडिशन जा रहा है. हर 1 साल 2 साल के बाद दे कम अप विद अ न्यू एडिशन डिपेंडिंग ऑन द PMI or the PMBOK version. ठीक है? So don't worry about it. Just look for the expected monetary value, किस तरह से calculations होती हैं, और decision tree. अच्छा, for most of you who are doing MSPM, आप लोगों के साथ second semester में या third semester में you can actually have take whenever you want. Quantitative techniques जब हम पढ़ाते हैं तो most of the time we cover the decision trees in that.
तो आई एम श्योर अगर स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस में नहीं कवर हुआ है तो क्वांटिटेटिव टेक्निक में, और डिपेंडिंग ऑन what 16 years of education have you received before starting this MSPM work, हो सकता है कि आपने ये चीज़ें की हुई होंगी. So hopefully for most of you it won't be anything new, मगर what I will like to do within this lecture is try to take you through it ताकि आपको एक तरह का awareness हो जाए या FYI हो जाए, ठीक है, जिस तरह से भी, but you'll know what it is all about. अच्छा, एक और चीज़ जो हम फोकस करेंगे इज़ ऑब्वियसली द रिलेशनशिप ऑफ रिस्क एंड द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो चल रही होती है स्टार्टिंग विद द 5 फेजेस की हम जब बात करते हैं, इनिशिएशन की बात करते हैं, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली वी स्टार्ट ब्रिंगिंग इन मोर रिसोर्सेज एंड स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर मनी ऑल्सो. उसमें प्लानिंग फेज में जाते हैं, प्लानिंग से चलते हैं, एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग में जब हम आते हैं तो वी हैव एक्चुअली हिट द कर्व, ये जो बेल कर्व का टॉप होता है. अब नीचे जा रहे हैं तो मॉनिटरिंग कंट्रोल हो रही है, प्रोजेक्ट हो रहा है, रैम्प डाउन हो करते हैं एंड फाइनली टुवर्ड्स द क्लोजर फेज. अब रिस्क कहाँ इस्तेमाल होता है? रिस्क की बात जो खूबी है, सबसे बड़ी बात, रिस्क आर इवेंट्स दैट हैव नॉट हैपेंड येट. सो बाय दैट डेफिनेशन majority of risk processes will be happening in your planning phase. Execution में, yes, you will continually and continuously be monitoring risk, है ना. जिस तरह से प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट का वो साइकिल चलता रहता है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, उसी तरह से प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट भी चलती रहेगी. एंड यू हैव टू कंटिन्यूसली एंड कंटिन्यूअली मॉनिटर द रिस्क्स. जो चीज़ें पहले हो सकता है लो हो अब हाई हो, या कोई हाई है अब वो लो हो जाए, इररिस्पेक्टिव. एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेते हैं. अब उस स्टेट में प्रोजेक्ट में इश्यूज आ रहे होते हैं. अगर हम अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह उसको अच्छी तरह से मॉनिटर करके मिनिमाइज नहीं कर देते हैं रिस्क के इफ़ेक्ट्स को, या एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो अब हमको वो इश्यूज की सूरत में नज़र आना शुरू हो जाएंगे. वो जो नेचुरल प्रोग्रेशन है रिस्क की, वो है risk becoming issues, and if issues cannot be curtailed correctly, then issues become changes to the project. So with all that in your head, हम लोग आगे बढ़ेंगे. I'm sure you've had a lot of information in the past few lectures, and it won't come as any surprise to you. When you talk about the project risk management, there are key definitions of it. I'll quickly go through it, और फिर हम कोशिश ये करेंगे कि आगे lectures में भी आप उसको मॉनिटर करें या उसकी definitions we'll try to give you that also. So when you talk about the PMI's processes, उसमें जो major risk की definitions हैं, the key definitions that you could be asked as far as the exams are concerned, and more importantly कि if you want to go and do PMP certification from this after MSPM, then you need to know the basic definitions of this. और वो क्या चीज़ें हैं? Certainty, risk, and then the uncertainty. You need to know what a business risk is, the insurable or the pure risk, the technical risk, and the project management risk. याद रखें, there are differences between these different terminologies. I'm only giving you the terminologies at this time ताकि you can go do Google searches, or you can go do read the PMBOK and you will get to it. जब हम टेक्निकल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिस्क की बात करते हैं तो उसके साथ और भी तरह तरह के रिस्क हैं. ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क होते हैं, कुछ होते हैं एक्सटर्नल रिस्क, और फिर होते हैं इंटरनल रिस्क, कुछ होते हैं लीगल रिस्क. जब हमने RBS दिखाया था आपको, द रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, पिछले 1-2 लेक्चर्स में दिखाया था, उसको सबसे पहले जो एक डिवीजन होती है रिस्क की एट अ वेरी हाई लेवल, वी डिवाइड इट इनटू 3 सेगमेंट्स. एक तो होते हैं इंटरनल रिस्क, दूसरा होता है एक्सटर्नल रिस्क, और तीसरा होता है टेक्नोलॉजिकल रिस्क. उसके साथ डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू हैव, यू कैन ऑल्सो हैव द 4th हाई लेवल डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्टिंक्शन और कैटेगराइजेशन, और वो हो सकता है प्रोसेसेस
risk associated with project management processes or just processes in general. फिर बात करें known risk की और unknown risk की. We'll talk about that. Known risk क्या होते हैं और unknown risk क्या होते हैं. The expected monetary value. The acronym for this terminology that we widely use is the EMV, the expected monetary value. The triggers, those are also known as the risk symptom or the warning sign. याद रखें risk क्या है. Risk is not something that has happened. I just said it and I'll repeat myself. It's something on the horizon that you kind of foresee. More experience you have, more work you have done in a particular field, more aware you are of things that can come and bite you later on. And you want to actually eliminate or minimize it at this point in time, ताकि when it does happen, or if it happens, then you have a strategy, one thing. Second thing, जब आपके पास strategy भी है, your organization and your project is well equipped and to meet or respond to that particular risk. The next one will be your contingency plan. The contingency plan and the fallback plan. वो जिसको strategizing हम कहते हैं. Step 1, 2, 3 or 4 when it happens kind of a situation. The contingency reserve and the management reserve. The contingency reserve, it's that pool of money or the bucket of money that is aside from your typical cost of the project. आपका cost क्या होते हैं? It's the WBS activities. How much will it cost me to do a certain activities or to do a certain project? Apart from that, you always should have a certain pool of money, 5%, 10% put aside of situations to meet with situations. Now they can be known situations or unknown situations, but is definitely not part of your work activities. ये वो चीज़ें हैं जो आपने partly plan की होती हैं. Contingency reserve जो होते हैं वो होते हैं known unknown. यानी कि बहुत से project में ऐसा हो चुका है, there is a great probability or likelihood that it may happen, but I cannot add it to my WBS because it hasn't come and affected me. There's always the word may or could with any of these reserves, right? अगर may or could का word नहीं होगा, then it should be part of your work breakdown structure. May or could, that means things that haven't happened yet, are in two categories. Management reserve and the contingency reserve. Contingency reserve, like I said, are the known unknown. ठीक है? टेक्नोलॉजिकल हो रहा है, आप कोई सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, 3 साल हो गए हैं. देयर कुड बी अ सिचुएशन कि जिस सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं वो उसका वर्जन अपग्रेड आ जाए. इट्स अ माइक्रोसॉफ्ट या लेट्स से कि आईफोन की कोई एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे हैं और आईफोन का अब जी नया वर्जन आ जाए मार्केट में. बिकॉज आपका प्रोजेक्ट 1 साल का था जब आपने स्टार्ट किया, तो यू वर वर्किंग ऑन मे बी अ वर्जन 5, और मगर जब अब टाइम आगे आगे जा रहा है, I've started kind of hearing from that little chidiya that this could be, the version 6 could come out. ये क्या है? Known unknown, contingency reserve. हुआ नहीं है, मगर अगर हो जाएगा तो it will cost me time, it will cost me money. So I have somewhere else like a pool of money that I can get because now I know कि ये change की तरह affect करेगा मुझे. ठीक? दूसरा जो होता है मैनेजमेंट रिजर्व, वो होता है अननोन अननोन. नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कंपनी मर्जर हो सकता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई एम काइंड ऑफ don't know what to do. We know कि it will cost me more money, I need more money either in shape of extended time or in shape of getting new technology. जो भी है, ऐसी चीज़ें that I cannot predict. That's the unknown unknown, and that is the management reserve. Then the Delphi technique and the workarounds. अच्छा, अब just because कि आप लोग मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट स्टडीज़ कर रहे हैं, please go back without trying to find it through the pages of presentation. Go back and try to pull it out from Google.
Wikipedia, wherever, आप जाके plug in these words and try to get more information out of it. इनकी meanings निकालें. Think of this as an unmarked assignment for yourself. Okay? We are not in a position to actually keep spoon feeding you with every little bit of information. So these are the things that you need to know as part of PMI preparation. So what is a risk? Risk is any potential event or a future situation that may negatively affect my project. अब ये वो चीज़ है जो अभी हुई नहीं है मगर हो सकती है. The likelihood we know, चाहे वो बहुत ज़्यादा likelihood हो या बहुत कम likelihood हो या probability हो. और दूसरा क्या है, the impact and the exposure to my project. मगर ये risk वो चीज़ है that hasn't occurred, that hasn't happened, that hasn't bitten me yet. But I as a project manager know that I need to deal with it and I need to kind of plan out how I will work with this risk or how I will react to the risk. So the definition of the risk is that it's a potential event or a future situation that may negatively affect my project. Risks are identified, described and analyzed in terms of वही चीज़ जो आपको पहले भी बताई जा चुकी है. एक तो probability और the likelihood that they will occur. दूसरा ये होता है the effects, the impact or the consequences if they do happen. जो तीसरी चीज़ जिस वक्त में हम बात करें the time frame within which their consequences might occur. अगले 2 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में जो भी है. So this is another dimension to just the impact and the probability. So what would be some examples or few risks to your project or to any project? Risk क्या होंगे? Technology not easily available, या जिस पे आप काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर उसका लाइसेंसिंग all of a sudden बढ़ गई है, merger हो गया है, some company is totally getting or could get rid of that software altogether. Here you are planning ahead. मेरे एक फ्रेंड होते थे, उन्होंने लोटस नोट्स पे बहुत काम किया एप्लीकेशन, और वो जो 1-2 कंपनीज थी जो बहुत ज़्यादा लोटस नोट्स पे फोकस करती थी, एंड आई स्टिल रिमेंबर EDS एंड टू सम एक्सटेंट HP ऑल्सो, और IBM भी शुरू में शायद यूज़ करती थी. ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्टेड मूविंग टू द माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक. ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो कंसल्टेंट्स थे दे वर 3 or 4 वेरी यंग एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने पूरा अपना एक छोटी सी कंपनी बनाई थी, और दे वर बिल्डिंग एप्लीकेशंस और टूल्स फॉर लोटस नोट्स. एकदम से इतने इन्होंने मेहनत की, बच्चों ने, लड़कों ने, और काम करना शुरू किया था. ऑब्वियसली लोन्स लेके स्टार्ट हुआ था. 6 या 8 महीने के अंदर अंदर द डिमांड फॉर देयर एप्लीकेशन एंड टूल जो प्रिडिक्ट वो लोग कर रहे थे इधर से नीचे आ गई. सो दीज आर रिस्क्स टू द प्रोजेक्ट. अब ये हम इसको कंटिंजेंसी कहें, रिजर्व में से कहें या मैनेजमेंट रिजर्व में से कहें, मैं ये जो छोटी सी कंपनी थी, impact was catastrophic to this company. जहाँ they were predicting that 100,000 people will actually buy their application or use their application, all of a sudden 1 साल या 1.5 साल के अंदर अंदर 100,000 का figure was left to about 10 to 15,000 users. Obviously उनका तो bread and butter was not just selling that product or selling that application, but also they were planning ahead कि जी इसमें maintenance या upgrades की request आएगी, and that is how they were supposed to make more money. Risk to the project ऐसा भी हो सकता है. So you have to actually think ahead and say कि what will I do if it happens. Resources not committed to the project, and we are talking about human resources. बड़ा एक कॉमन सा प्रॉब्लम है फॉर ऑल ऑफ यू दैट आर लिसनिंग टू मी. जहाँ भी हम काम करते हैं लोगों के साथ, अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट किलिंग रिस्क, जिसके लिए हर प्रोजेक्ट मैनेजर को तैयार होना चाहिए. सिंपल और रिस्क क्या हो सकते हैं? स्पॉन्सर्स नॉट शोइंग अप फॉर मीटिंग.
मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखा करें केयरफुली कि आपका स्पॉन्सर कौन है। आपका जो स्पॉन्सर होना चाहिए उसका डायरेक्ट जो यूज है फॉर यू एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर is to make sure that he or she is available when you want them to be available, and they always have the intent of pushing your project ahead or pushing your project in the right direction. जब आपको ज़रूरत है they are a phone call away, right? अगर आपके जो स्पॉन्सर्स हैं बड़े बड़े नाम हैं जी, CEO ऑफ द कंपनी आपके स्पॉन्सर हैं या CFO आपके स्पॉन्सर्स हैं, there is a great probability that they will not be available. It also depends on the size or the complexity of your project and how reliant they are on this project. But most probably they have other things to do. Their plate is already full. और अगर वो foreign tours पे बहुत जाते हैं तो God help you, because जब आपको ज़रूरत होगी तो they will not be available. So as project manager you need to carefully eye who your sponsor is and the availability of your sponsor. अगर शुरू के कुछ दिनों में आप उनकी अवेलेबिलिटी को देख रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि ये इट्स नॉट अ गुड साइन इन डेज टू कम, देन मेक इट अ रिस्क, आइडेंटिफाई दैट, डोंट लेट इट बिकम एन इशू. Find somebody else who can, yes, they can remain your sponsors. I'm sure you need to be politically correct. Find somebody else who will have the authority to call the right people, attend your meetings, and actually approve your changes, and is an active part in the change control board. Okay? Unidentified end users, etc., etc. ठीक है? जो आपको इस वक्त नहीं नजर आ रहा होगा, सोर्स रेफरेंस जो है IBM लर्निंग सेंटर, एंड इट्स एक्सक्लूसिवली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. वो तो हो गए रिस्क्स. अब अगर हम थोड़ा सा अपने लिए टनल विजन बना लें, दैट मीन स्पेसिफिक टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, देन वी यूज द टर्मिनोलॉजी द प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट. So what is project risk management? Risk management is the systematic process of doing several things. वो याद एक पेपर में हमने पढ़ा था, वो एक साइकिल जो चल रहा होता था, प्लान, आइडेंटिफाई, एनालाइज, मॉनिटर, कंट्रोल एंड देन द रिएक्ट. वो जो एक साइकिल सामने पढ़ा था एक पेपर में, वही चीज इधर आ गई है. मगर नाउ वी आर बीइंग स्पेसिफिक. प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट इज द सिस्टमैटिक process of doing several things: identifying, analyzing, and then responding to project risk. How do I respond to a particular project risk? Again, same word. It's not a stair that can be done at one point in time कि आपने planning में बना लिए, आपने 100 risks identify कर दिए and then your work is done. No. Project manager का काम किसी भी टाइम ये नहीं है कि मैंने एक काम कर लिया और बस अब मुझे दोबारा नहीं करना है. ज़्यादातर जो प्रोसेसेस है ना, वो कंटिन्यूस मूवमेंट है, एंड द राइट आंसर यूजुअली ऑलवेज इज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट. कोई भी आप नॉलेज एरिया ले लें, अगर आप प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, डू वी जस्ट डू इट वंस एंड देन फॉरगेट ऑल अबाउट इट? नो. Project communication management, is it something that we do one time and then forget about it? No. हर चीज along with project risk management and project quality management is a continuous and a continual movement which you have to do as a project manager throughout the life of the project. It is the most effective means of preventing and or minimizing exposure to your project, right? It is the most effective and also efficient means of preventing and or minimizing, if not eliminating, exposure to your project. जब वो होगा, I already have a plan, I'm going to take care of it, and everybody will be happy in my project along with me as a project manager. ये जो पूरी situation है, it's a continual process of identifying, analyzing and planning for risk throughout. अच्छा, सबसे अच्छा वो काम होता है कि जब आप प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट बना रहे हैं, उसमें part of it of what I have done and what I plan on doing, you know, accomplishments for this time period, and then
planned accomplishments for the next time period, 3 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए, and they're very important part of your project status report. Topmost 5 risks, 10 भी हो सकते हैं, topmost 5 or 10 changes, and topmost 5 or 10 risks. इसका क्या फ़ायदा है? That means it's a reminder to the sponsor and to people who you are communicating upwards and downwards that you are predicting that something is on the horizon. अभी आया नहीं है, और ideal situation वो है कि आप कहें कि पिछले 5 हफ्तों से मैं आपको बता रहा हूँ as a project manager that these are risks to my project. अब वो इशू बन गया है, तो don't assume that I kind of got caught blindsided. No, I have always been predicting this as a total risk. Gives you the comfort level and gives the sponsors the comfort level that you as a project manager know what you're doing and that their project and their money is in safe hands. Ideal situation to be in as a project manager. अच्छा, अब एक नीचे जो इटैलिसाइज वर्जन जो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आई एम सॉरी छोटा सा फॉन्ट थोड़ा छोटा है, बट आई एम श्योर यू ऑल्सो हैव द प्रेजेंटेशन स्लाइड्स विथ यू इन फ्रंट ऑफ यू. अब अगर हम इसको पढ़ें तो ये क्या कह रहा है, दैट रिस्क्स एसोसिएटेड विथ प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन आर यूजुअली द स्मॉलेस्ट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इनिशिएशन एंड चार्टर अप्रूवल फेज ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. ये वो सिचुएशन है that in the initiation phase and the project charter approval, everything is looking rosy to you and the sponsor. उनको लग रहा है कि yes, it's a large project, it's a complex project, but I think I have all of the information, so risks are not that much. है ना? Risks with integration, that means at this point in time, you're saying, I'm feeling very comfortable that on the horizon, I've planned it all out, I can plan it all out, and I'll be able to successfully integrate and take my project to a successful closure. So read this again. Risks associated with project integration are usually the smallest during the project's initiation and charter approval phase of the project life cycle. और जिसको हम smallest कह रहे हैं, the likelihood and the impact both are minimal because at this point in time during the initiation phase मुझे लग रहा है कि I don't have that many risks, because if you are thinking that there are too many risks associated with the project, then what are you doing? You as a project manager, as a conscientious project manager, should raise your hand and say this is not a good enough project to move forward with. This is a good example. हम लोग PMI के प्रोसेसेस और PMI के क्वेश्चंस पे इस वक्त फोकस कर रहे हैं, मगर याद करें कि एक पेपर हमने किया था कि पढ़ा था that risk is a four-letter word but denial is our biggest enemy. इसमें यही बात कह रहे थे कि at that point in time they assume that nothing bad will happen and they tend to ignore these things. And this is exactly what you are seeing up there in italicized version, which obviously is telling you that it is important. So what is project risk management processes? So what are those processes? Risk management processes include several things. सबसे पहला जो है वो planning, और planning में क्या है? You need to have a formal planning activity. You need to have a total risk management plan. Second thing is analysis. You plan something, you identify and you're analyzing to quantify the likelihood and predict the impact on the project. Then handling strategy for selected risk, the mitigation strategies. And then ability to monitor progress in reducing these risks to the level to minimize impact on the project. अब हम याद करें वो जो रिस्क रजिस्टर हमने आपको दिखाया था या आपके साथ शेयर किया था, जो पहला सेट था, it had the serial number, it had the identified risk, उसमें likelihood भी थी, probability थी और consequences थे, उन दोनों के numbers थे और एक risk control का number था. Second set जो चल रहा था
उसमें ये था कि ये सारी इंफॉर्मेशन थी मगर अब हमने क्या उसमें ऐड कर लिया था सेकंड सेट में, mitigation strategies or strategies to minimize the impact on project. Based on that, I was able to monitor those risks and was also able to reduce the impact if it happened and the likelihood of it happening. Or risk control was again the product of the impact and the likelihood. इस तरह से अगर कोई 9 था तो अब हम there is a great probability by implementing the right strategy or by training of the employees, I could bring that 9 down to a 6, right? So that is what we are talking about when we say that the ability to monitor the progress in reducing these risks to the level to minimize the impact on the project. यानी कि 9 से अब हो सकता है आप severity को 6 पे ले आए हैं. Project risk management processes according to PMBOK. अब ये कितने हैं? ये बोल रहे हैं कि ये अब हमारे पास 6 processes हैं. Very similar to what we have already talked about. सबसे पहले तो planning of risk management. Second is risk identification, identifying risks. वो सारा जो हमने बात की थी identification of risk की. सेकेंड वो थर्ड और फोर्थ जो है दे आर दी एनालिसिस. एक का है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो सब्जेक्टिव एनालिसिस है और क्वांटिटेटिव इज ऑब्वियसली द नंबर, राइट? तो जो भी है द एनालिसिस कैन बी ईदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. वंस यू हैव डन कवर्ड दीज देन यू हैव द रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग. ये हो गया, नंबर हो गया, इम्पैक्ट लाइकलीहुड का जो हमने एक नंबर लिया. अब हम क्या करें? अब हम मिटिगेशन स्ट्रैटेजी पे जा रहे हैं. इट्स द होल रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग एंड देन you will sit back and you will monitor it. You will monitor whether there are new, or because again it's a continuous cycle, so you can go back and you can go to identifying new risk, analyzing the qualitative and the quantitative aspect of that particular risk, coming up with strategy of response planning and again monitoring and control during this life cycle. And where are we? We are at this point now. वो जो बेल कर्व है, बेल कर्व का अब हम टॉप मोस्ट पे आ रहे हैं. इसमें हमारा काम क्या है एज प्रोजेक्ट मैनेजर्स? टू कंटिन्यूसली मॉनिटर, राइट? ये हो गए 6 हैं टोटल. प्लानिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, qualitative risk analysis, quantitative risk analysis, the risk response planning, and then the risk monitoring and the control. ये पिक्चर जो आपको नजर आ रही है, अब हम देख रहे हैं कि 5 out of the 6 processes, the 5 processes are falling under the planning phase of the project. And there is only one process that is under the monitoring and control phase of the project. क्यों है इस तरह से? Very simple. Risks are not issues. Risks have not happened. Risk में सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि you have the luxury of not killing the fire. You are making sure that the fire never erupts. So you are in the planning phase, okay? सारे ये जो हैं risk management planning, risk identification, the quantitative, the qualitative risk analysis, and also the risk response planning is all done when the resources that are on the project is minimal and the cost that you're incurring from one day to another is also minimal. So in the life cycle, you are at this phase that you have that luxury of assessing and reassessing risks. For project risk management, the whole idea is that of being proactive rather than being reactive. वो जो हमने स्टीवन कोवी की छोटी सी मूवी देखी थी या प्रेजेंटेशन देखी थी, the whole concept was how you react to things. If you are trained and educated
in responding well and reacting well to situations, then you probably are one of the better risk managers. ठीक? So that presentation talked all about being proactive rather than being reactive. And even when you react to things, you have control over your situation. You are just not like a cannon कि कुछ हमको छेड़ा और हमने हमारी तोपे हमने आग के बगोले छोड़ना शुरू कर दिए, right? This is not what a good project manager is all about. And this is not how a good project manager reacts to situations. Let's talk about the risk preference and the utility theory. अब याद करें कि एक तो ये कि एक तरह से ये ऑल इंक्लूसिव भी बात हो रही है इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में, मगर वी आर डेफिनेटली फोकसिंग ऑन द PMI रिक्वायरमेंट्स एंड द PMI प्रेफरेंस. नाउ इसमें क्या है, रिस्क प्रेफरेंस एंड द यूटिलिटी थ्योरी. और जो पहली चीज आती है वो होती है कि यूटिलिटी क्या चीज होती है. ठीक है, सो लेट्स विल टॉक अबाउट दैट. तो देखते हैं कि यूटिलिटी की क्या डेफिनेशन है. यूटिलिटी इज नॉट अ यूटिलिटी स्टोर, ठीक है, बट यूटिलिटी can be defined as the amount of satisfaction or pleasure that the project manager receives from a payoff. This is also called a project manager's tolerance for risk. It's that enjoyment or the pleasure. More risk you take, जब उसका payback होता है, तो it gives me a real pleasure. कि देखा मैंने कहा था कि that I could do this without this person. सबसे ज़्यादा जो होता है जब आप ह्यूमन रिसोर्सेज आपको ट्रबल देते हैं एंड व्हेन यू लेट गो ऑफ देम देयर इज ऑलवेज अ फियर फैक्टर कि हाउ विल योर टीम रिएक्ट टू इट, या आपका प्रोजेक्ट काम चलेगा आगे या नहीं. मगर इट्स दैट थिंक ऑफ इट कि दो लोग यू आर अज्यूमिंग दैट दे एक्चुअली हर्ट यू एंड दे लेफ्ट द कंपनी, बट उस आपने कहा कि हम लोग करेंगे और मैं दिखाऊंगा और मैं ये करता हूँ, और एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर द प्रोजेक्ट गोज अलोंग फाइन, perfectly fine with them, actually start doing better. That pleasure is called the utility of a risk. It happened, it affected, it became an issue, but I was able to take care of it. And yes, I did not go out and started hiring high price consultants. मैंने कहा कि हम लोग अपने existing team players के साथ काम करेंगे. We don't need to go out and get new. It's a risk tolerance. Right? So at this point in time, what is it? It's the pleasure, and that is what the utility is saying. So utility can be defined as the amount of satisfaction or pleasure that the project manager receives from a payoff. This is also called project manager's tolerance for risk. The project manager must use expert judgment and tools to deal with risk, right? ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि मैं ये सब कर सकता हूँ. प्रोजेक्ट मैनेजर के पास के शोल्डर्स पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं ऑफ मेकिंग श्योर दैट द प्रोजेक्ट इज इन सेफ हैंड्स. ये नहीं कि आप कोई सुपरमैन, अगेन आई यूज द सेम वर्ड, कि आप सुपरमैन या बैटमैन नहीं है कि आप उस चीज़ को चलते रहने दें एंड ऑल ऑफ अ सडन यू नो दैट व्हेन द बिल्डिंग इज अबाउट टू कोलैप्स यू जंप इन एंड ऑल ऑफ अ सडन बिल्डिंग को बचा लिया एंड यूर अ हीरो. Project managers tend not to be heroes. They have the ability and the capability of planning things out ताकि वो उस level को ना पहुँचे जहाँ all of a sudden something dramatic needs to happen. Right? So with that, the ultimate decision on how the project manager deals with any risk, not just one particular risk, but any risk, is based on his or her own tolerance for risk. अच्छा, यहाँ पे एक बड़े मजे की चीज है कि मोर मच्योर यू आर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड यू हैव, यू टेंड टू बी केयरफुल विथ टेकिंग रिस्क्स, एंड यंगर यू आर, मोर न्यू यू आर इन दिस प्रोफेशन, यू टेंड टू टेक मोर चांसेस. एंड बिकॉज आप में वो अग्रेसिव स्ट्रीक होती है, यू नो यू आर गेटिंग प्लेजर ऑफ फ्रॉम getting things done. देखा मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है बट आई वर्कड हार्ड एंड आई गॉट दिस डन. जो एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं या मैच्योर प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, दे टेंड नॉट टू टेक
risks. Okay, so 3 तरह के रिस्क टेकर्स होते हैं. अब ये तो हमको पता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर कैन बी अ रिस्क टेकर. ये जो डिफरेंट तरह के हैं, बेसिकली 3 तरह के रिस्क टेकर्स की हम बात करते हैं. सबसे पहले जो होता है, इसका टर्म जो होता है वो हम यूज करते हैं रिस्क अवर्टर और अ रिस्क अवॉइडर. यूटिलिटी राइजेस एट द डिक्रीजिंग रेट. सिंपल सी चीज है, ज्यादा रिस्क होगा, प्लेजर आपका कम हो जाएगा. यू आर नॉट अ रिस्क टेकर, यू आर नॉट अ रिस्क टेकर. जो बात मैंने अभी कही है, मोर मैच्योर, मोर एक्सपीरियंस्ड, यू टेंड टू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रिस्क अवर्टर. यूजुअली ये नहीं है कि ये इट्स अ रिटन रूल समवेयर, इट्स कैन ऑलवेज चेंज, मगर बेसिकली जनरली दैट इज व्हाट we assume that will happen. When more money is at stake, project manager satisfaction or tolerance for risk decreases. That means they don't want to play, they don't want to gamble away. But you are a risk averter again. You don't want to be in a situation के आर या पार, है ना? You don't want to be in a gambling situation. The risk averter or the risk avoider kind of people prefers a certain outcome. वो जो predictability होती है उनके लिए वो बहुत important होती है. And they demand premium to accept risk. ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे पता है कि risk है. Make sure either I have more money in my contingency or management reserve, or assume this and give me more activities up front in my WBS, so I have more cushion to absorb these risks. By the sound of it, these are good, solid project management professionals who can predict these things and are good planners. They are more of a proactive person rather than reactive. ठीक है? So ये risk averter है. If you look at the curve, utility is rising at the decreasing rate. दूसरी जो कैटेगरी वो है रिस्क न्यूट्रल की. द स्लोप ऑफ द यूटिलिटी कर्व इज वेरी कांस्टेंट, है ना, चढ़ रहा है वो. दीज आर रिस्क न्यूट्रल. कभी they tend to take risks, sometimes they are averters and sometimes they also agree to take risk, right? So दोनों situation हो सकती है. They assess, analyze and then make a decision. Generally this is a safe situation to be in. जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है रिस्क लवर की, रिस्क सीकर की. These are aggressive project managers. इनके लिए project manager is a mission. They are like, they tend to behave like Superman, right? The utility rises at the increasing rate. क्या मतलब है? More the risk in a project, more they are eager to take on that project and more happy they're feeling in the situation. Okay? The project manager's satisfaction increases when more money is at stake. छोटी सी टीम के साथ वो चाहते हैं कि हम सहारा डेजर्ट में जाके ऑयल ड्रिल करें. निकल गया तो वी आर बिलियनियर्स, नहीं निकला तो आई एम रेडी टू टेक दैट रिस्क. प्रेफर्स अनसर्टेन आउटकम and they are willing to pay penalty to take risks. आर या पार, wonderful example, wonderful उर्दू जिसको क्या कहेंगे, मुहावरा कह लेंगे या जो भी कहेंगे, मगर वो इट्स परफेक्ट फिट फॉर अ रिसीवर, रिस्क सीकर और अ रिस्क लवर. अच्छा, इसका जो कर्व हम देख रहे हैं वो मोर डॉलर इज एट स्टेक, हायर द यूटिलिटी. ओके, तो जो 3 कैटेगरी है सिंपल सी होगी. एक तो हो गया रिस्क एवर्टर का, यूटिलिटी राइजेस एट द डिक्रीजिंग रेट. फिर हो गया रिस्क न्यूट्रल, sometime here, best situation to be in. और बड़ा एक आइडियोलॉजिकल या आइडियल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर होता है. ऐसा भी नहीं कि इतना रिस्क से डरे कि आगे ना कदम बढ़ा सके, मगर इतना भी ना कि आगे दौड़ लगा दी और पीछे all these risks and issues are now coming to haunt them.
तीसरी जो कैटेगरी है ये वो सिचुएशन है कि दे आर गैम्बलर्स, दे टेंड टू गेट हाइप फ्रॉम सिचुएशंस वेयर they tend to get more revenue or more pat on the back, more recognition by making the most out of situation and taking big risks. As project team, you do not want to be working for a risk seeker, because project management is not a gamble, right? अगर आप भी enjoy करते हैं and you are also a risk seeker, then maybe your enjoyment will increase, मगर at the same time unpredictability बहुत बढ़ जाती है इस तरह के project manager के साथ काम करने में. Let's look at the risk definitions. Decision making can fall into the following category. सबसे ज़्यादा important जो है वो है certainty. All information for making the right decision is available. Usually जब हम risk averters की बात करते हैं तो they fall into this category of certainty. जब when they make decision, they like having all of the information available for them. All information for making the right decision is available. Can predict the outcome with confidence. Again, if I have all of the information, I know that the mitigation strategy that I can come up with will kind of fall right in its place. दूसरी कैटेगरी है risk. The totality of the occurrence can be described with an established confidence limit. I am pretty confident that if I follow these steps, this is what will happen, but there is a streak of unpredictability. The expected payoff can be mathematically calculated. This whole slide is kind of moving us in more of a mathematical calculation, right? So underline the word expected payoff. तीसरी जो कैटेगरी है वो है uncertainty की. Meaningful assignments of probabilities are not possible. I don't know enough about this issue. Yes, I can kind of see it on the horizon, but at this point in time, I don't have all of the information with me or in my control to predict the outcome or even the probability of it happening, right? So under the uncertainty category, we are saying that meaningful assignments of probabilities are not possible. Management decisions can be made applying one of the 4 criterias. अब जो मैं 4 criterias की बात अभी करूँगी, तो for all of you who are listening to me, stick to just the definition version of it and know what those terminologies are, because if you plan on taking, like I said, the certification exam, you will be required to know about it. Decision making under risk, the expected value. अब expected value में अब हम क्या बात करते हैं? Expected value again is a mathematical kind of a calculation, and it's a product of 2 numbers. We are focusing on 2 numbers. सबसे ज़्यादा एक जो चीज़ है वो है probability, the states of nature, the likelihood of any event happening, right? The risk event probability, and we also call it the state of nature. An estimate of the probability that a given risk event will occur. जो हमने पिछले कुछ लेक्चरों में likelihood और probability की बात की थी, this is exactly what we are talking about. Is the risk event happening? What's the probability of the risk event to happen? इसके लिए एक और जो terminology हम use करते हैं वो है state of nature की. The risk event value. The risk event value is the payoff for strategy. ठीक है? An estimate of the gain or loss that will be incurred if the risk event does occur. अब हम impact और consequences को एक और तरह से देख रहे हैं, right? इसको हम लोग कह रहे हैं कि it's a risk event value or the payoff for strategies. There could be multiple strategies that I could be looking at any point in time, और मेरा क्या काम है as a project manager is to make sure that I pick up a strategy, right? That will give me an estimate of the gain or loss
that will be incurred if the risk event does occur. Direct, we are moving into more of a mathematical equation of risk event or the expected value. The decision making under risk, the expected value. अच्छा, ये जो example अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं वो हेरल्ड कर्जर की किताब से आया हुआ है. So for all of you that are out there, please go and look at the book if you have your hands on it. वरना obviously ये है, ये तो आपके पास है presentation में, you can always use that. Expected monetary value, जो हमने term use किया था ना, EMV, the expected monetary value, यहाँ पे उसकी calculation आ रही है. What is it? Simple सी चीज है, EI equal N और J equal 1, यानी J equal 1 through N. Summation sign है Pij to the little pj, right? What is it? EI is the expected payoff for strategy. ठीक है, S1, S2, S3. What is the big or the capital P? That's the payoff element from strategy number 1 through 3, or the state of nature from 1 through 3 in this particular situation. छोटा जो P है, that is the probability of the event. What's the likelihood of the event happening? Simple सा है, if you look at this, states of nature है, right? The numbers are assigned probabilities of occurrence for each state of nature. ऊपर जो आप देख रहे हैं वो है N1, N2 और N3. इधर जो आप देख रहे हैं वो स्ट्रैटेजी 1 है, स्ट्रैटेजी 2 है और स्ट्रैटेजी 3 है. What will be E1? अब 3 situations है ना, J goes from 1 to the number of states of nature, or in this particular situation, in this particular example, you are taken from 1 through 3. So E1, E2, E3, 3 expected values आपके पास आ जाएंगी. अब क्या है, E1 को देखें अगर हम लोग तो What will be E1? E1 सबसे पहले तो state of nature जो है उसका 50 है times 0.25 plus summation sum of payoff element इस वक्त क्या है 40 times the probability of it happening is 0.25. Number 3, third state, payoff element is 90 times the probability of the event, or N3 is 0.5, 50% of the time. When you sum it all up, simple summation sign, when you sum it all up, the result is 67.50. Let's look at the second one, the E2, the expected payoff for strategy number 2. अब क्या है, पहले state of nature में the probability is 0.25 मगर and the payback or the payoff element is 50. So it's 50 times 0.25 plus 50 times 0.25 happens to be the same number, but what is it? It is S2 strategy or state of nature second N2 के लिए 50 times 0.25 plus 60 times 0.5, 50% of the time, right? So if you sum it all up, the answer is 55. E3, the third, following the third strategy. For state of nature N1, the payback or the payoff element is 100. 100 times 0.25, 80 times 0.25, and then now there is a negative payoff element. So it's minus 50 in parentheses times 50% of the time, state of nature N3, and which is 0.50. When you sum it all up, because of that negative payoff element following the third state of nature, now your answer will be 20. So if I look at my E1, E2 and E3, the expected payoff value
is better for which strategy? Obviously, by looking at it, you know that it is for strategy number 1. So the payoff element is more for the first strategy, or the 67.5 tells you that the number is better than 55 and 20. So based on the expected payoff value, strategy 1 should be used. Simple sa hai. You need to know the mathematical formula for it. You will be given the state of nature most of the time, and you will be given different strategy values. Okay? So from calculation perspective, just understand that you have the formula that is given to you. Let's move on to the next one. It's the decision making under uncertainty. ये जो 4 हैं, इसको आप बस याद करने की या theoretical aspect से देख लें. पहला जो criteria है, उसका नाम जो है वो है Hurwitz criterion, and it's called the Maximax. The decision maker is always optimistic and attempts to maximize the profit by go for broke strategy. These are the risk lovers, right? And this is called the Maximax. उसको criterion का भी एक नाम है, वो है Hurwitz criterion. The next one is the Wald criterion, and this is called the Maximin. The decision maker, ये हो सकता है project manager हो, risk manager हो, या आपका कोई sponsor हो. The decision maker is concerned with how much he or she can afford to lose. In this criteria, a pessimistic approach is taken, right? Most probably the risk averter. Wald criterion, Maximin. तीसरा जो है वो है Savage criterion. It's the Minimax. The project manager attempts to minimize the maximum regrets. और जो last है वो है Laplace criterion. They transform the decision making under uncertainty into decision making under risk. ये जो 4 criterion है, please make sure that you understand and kind of know what it is all about. Maximax है, Maximin है, Minimax है, और Laplace criterion है. All of this falls under the heading of decision making under uncertainty. अब हम आगे जो चल रहे हैं वो है जो हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि 16 years of education में you've had exposure to more of decision tree techniques. अगर आप लोग engineers हैं तो I'm sure you've done this. People have told me that within quantitative technique they've learned this aspect of it. Magar obviously as part of your curriculum, let's focus and see how decision trees are made and what is it used for. Magar it comes under the umbrella of project risk management. So all of you need to know and understand this. So what is a decision tree? A decision tree is a diagram that depicts key interactions among decisions and associated chance events as they are understood by the decision makers. Decision tree hai, goes from left to right. Depending on situation, then it branches out. I'll give you an example in just a moment. The branches of the tree represent either decisions, shown as boxes, or they are shown as chance events like nodes or circles. ठीक है? So हम ये याद रखिएगा, it always goes from left to right. You start actually nodes बनाना शुरू करते हैं as chance events, and then it kind of branches out just like branches of any tree. Example हम लोग जो use करेंगे, बहुत simple सा example है. It will help you actually draw out a decision tree. Even for exam purposes, make sure that you have worked this particular question out so that you understand what it's all about. We are talking about making a decision between using machine A or using machine B. ठीक? Manufacturing का एक छोटा सा example है, simple सा. Machine A has a 40% chance of being used. Machine B, on the other hand, has 60% chance of being used. When you select machine A, you would select process C. You can select either process C or you can select process D.
when you use machine A, process C का जो वो number है, it has the probability of being used 80% of the time, and D, process D, is expected to be used only 20% of the time. ठीक है, एक तो ये ब्रांच बन गई. नीचे जब हम जाते हैं तो कहते हैं when machine B is selected, process C is selected 30% of the time and process D is selected 70% of the time. In the event that you select machine B, you will use process C 30% of the time and you will use process D 70% of the time with probability numbers in here. Now the question can be, what is the probability of being produced by the various combination? So let's look at what decision tree and what are these probabilities. This is also coming out of the Harold Kerzner book, so go out and get the right information. If you want to do a little read off on what it's all about, feel free to do so. And if you just want to even focus on the presentation slide, this will be good enough from understanding perspective. The following 3 steps are needed to construct a tree diagram. Sabse pehla, you would have to build a logic tree. It's always done from left to right. It includes all decision points and chance points. ठीक है? Decision points ये जैसे breaking into branches and then circles जो होते हैं उनको nodes कहते हैं. ठीक है? Chance points. Then what do? Second step पे आ गए. Put the probabilities of the states of nature on the branches. जितनी भी probability है 50%, 60%, 40% आपने सही branch पे डाल दिया, depending on the question that is being asked of you. Now what do you have? You have a probability tree now. तीसरा जो step है वो क्या है? Now you are going to come up with conditional payoff, और ये जो multiplication of 2 numbers हैं आप वो कीजिएगा and you will complete your decision tree. One thing to remember is that at the end of the day या end of the whole decision tree जब आप probabilities को add कीजिएगा, that always equals to 100% or 1.0, right? Sum of the probability would always equal to 0. So knowing, understanding कि आपने काम सही किया या नहीं, if you add it all up, आपका answer 100% probability ही आएगी. और अगर नहीं आ रही है, know that you have done something wrong. अच्छा, based on that example that I just shared with you, let's start and draw it. ठीक है, अगर आप लोग अभी निकालना चाहें तो एक पेन और पेपर निकाल लें and we'll start drawing. सबसे पहले हमने क्या कहा था? We start from left to right. अब आपको सबसे पहले क्या नजर आ रहा है? पहले जो 2 ब्रांचेस होंगी वो क्या होंगी? मशीन A एंड मशीन B, राइट? मशीन A के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है? 40% probability of being used. Machine B has 60% probability of being used. ठीक है, पहले 2 ब्रांचेस हो गए. अब आगे हम चांस पॉइंट्स पे जा रहे हैं. जब हमने मशीन A यूज की है, the probability of using process C is 80%. The probability of using process D for machine A is 20%. Okay? Leave it at that point in time. नीचे चले जाएं. Process B पे, machine B पे. When you use machine B, the probability of using process C is 30%. The probability of using process D is 70%. अब हम उसको multiply करना शुरू करते हैं. A and C 40% times 80% और 0.4 times 0.8. पहला नंबर आ गया. दूसरा नंबर A and D. Machine A is 40%, 0.4 times 0.2 or 40% times the 20%. 0.08 आ गया. Machine B पे चले जाएं. 60% times 30% BC would equal to be 0.18
machine B, using machine B, the probability of using process D is 70% of the time. So 60% times the 70% or 0.6 times 0.7 gives you 0.42. Add it all up, it should be equaling 1.0. Now what do you have? You have the different probabilities of using different processes. So if I look at it, BD is giving me 0.42 and AC is giving me 0.32. Okay. Let's look at another example of decision tree. Consider the following problem. You have the chance to make or buy certain widgets for resale. ठीक है, कोई भी manufacturing part है, you either have a chance to make it or produce it in-house, or you can actually procure it or get it from outside. चाहे आप चाइना से एक्सपोर्ट करना चाहें या आप किसी और कंपनी से बनवा के अपना लेबल लगवा के आप उसको मार्केट में वो करें. ठीक है, सो यू हैव अ चॉइस ईदर टू प्रोड्यूस इट योरसेल्फ, मेक इट इन हाउस, और प्रोक्योर इट फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है, दो सिचुएशन हो गई, ए एंड बी. ओके, if you make the widgets yourself, if you want to make it, what would you need? पहली चीज ये होगी कि you need a machine to produce this manufacturing part, right? If you do make it, then first thing is purchasing a machine, and purchasing a machine will cost you money. $35,000 की वो मशीन है. अब हमारा काम ये है, for all of you, take out a paper and a pencil और उधर से शुरू करें. Forget about what is in the box. अभी don't worry about it. पहली जो दो चीज आप कर रहे हैं वो है आप उसको दो ब्रांचेस में बना रहे हैं. पहली जो ब्रांच है जो आपको नजर आ रही है वो क्या है? If I make it, right, purchase of the machine, you know that it will cost you $35,000. Second जो branch है, the only information that you need right now is even for procuring it, procurement management also takes some kind of money. You would have to hire somebody who will go out, analyze the market, assess the market, and then go make the purchases. Inventory का भी या जो सारा जो contract management का जो procedure है, that will also cost you some money, but at this point in time, it is fairly minimal and the cost is $5,000. तो जो पहले दो branches आपके बन रहे हैं, making it, manufacturing it in-house is going to cost you the machine cost, which is $35,000. उसके नीचे आप जाइए, उसका ये है procurement charges जो हैं, management charges, वो हैं आपके $5,000. अच्छा, आगे चलें तो let's read the question. You have the chance to make or buy certain widgets for resale. If you make the widgets yourself, you must purchase a new machine for $35,000. If the demand is good, ठीक है, पहली ब्रांच आप जो देख रहे हैं उस वक्त, when I make my own, I purchase the machine, ये पहली decision branch है. Two conditions exist. If the market is good, which is expected 70% of the time, I will make an estimated profit of $80,000 because the quality of the widget is good, because नई machine है, अच्छा material हम use कर सकते हैं जिस तरह से customer की requirement है, market का अच्छा होना हम probability डाल रहे हैं, 70% of the time the market will be good, and the profit that I will make in this situation of selling good material to my good loyal customers is $80,000, right? ये भी information आपको provide कर दी गई है. Good market situation, 70% of the time, 0.7, give me a profit of $80,000. There is always a probability of the market not responding very well, but the probability of that happening is 30% of the time. And in this situation, the payback to me is $30,000. अब पहले नोट पे, remember जो हमने अभी एग्जाम्पल किया था, it is
good market is 70% of the time, 0.7 plus 0.7 times the $80,000. 0.7 times 80,000 will give me $56,000 plus the 0.3, 30% of the time times the 30,000. So 0.3 times the 30,000 gives me the 9,000. Summation, the expected value is the summation or the sum of both the conditions. $54,000, 0.7 times the 80,000 plus the 0.3 times the 30,000, which is 9,000. So 56,000 plus the 9,000. The expected payoff value at that particular node in situation where I am making my own widget is $65,000, right? आप यहाँ से यहाँ लेके गए और अब हम now we are going backwards. Okay? First, नीचे आ जाएं. सब कॉन्ट्रैक्ट किया हमने. प्रोक्योरमेंट चार्जेस या प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस में हमारे 5,000 खर्च हुए हैं. When the market condition is good, the payback is a little bit less because हो सकता है वो मटेरियल जैसा कस्टमर हमारा चाहता है हम वो नहीं यूज़ कर सक रहे हैं, जो भी है, राइट? जो प्रॉफिट जो आ रहा है हमारे हाथों में वो है $50,000 का, $50,000. There's always a probability of bad market situation, which is 30% of the time, and the payback is 15,000 in the situation. So, अब हम second situation के लिए अब हम पीछे जा रहे हैं. What is the expected value? Expected value is the sum of different situations. Good market condition is giving me 50,000. So 50,000 point times 0.7, which is $35,000 plus sum of poor market condition times the payback, which is the 15,000. So what is it? It is 0.7 times 50,000, 35,000 plus 4,500. So 35,000 plus the 4,500 is giving me the value, the expected value of 39,500. दो चीजें आपको ऊपर नजर आ रही हैं. When I make my own widgets, the expected payoff value is $65,000. When I go and procure my widgets from the market by importing, doing whatever, the expected payoff value is 39,500. Okay, I have these two numbers now. So what should be my decision, right? What should be my decision in this situation? अब आप देखें कि expected payoff value for making it in-house is fairly good. 65,000 है. मगर आप ये भी याद रखें कि you have to take that money out because आपने वो machine भी purchase की है. If you take the cost of the machine, then what will it be? 65,000 minus the $35,000. अब आपके पास कितने रह गए? $30,000, right? That was what you have. Subcontracting में 39,500 आपकी expected payoff value है, मगर आप जब उसमें से 5,000 निकालते हैं, you still have 34,500. So एक जो total आपके पास है वो है 30,000 और जो दूसरी situation है that gives you 34,500. So what will be your choice now? Your choice will be going with the subcontracting condition. Figure 17.4, and it is coming out from the Harold Kerzner की किताब, shows the tree diagram for this situation जो भी हमने describe किया है. In this case, the expected value of the strategy that the subcontractor do the work is $4,500 greater than the expected value for the strategy that manufactures the widgets.
in-house versus subcontracting. Hence, we should select the strategy that subcontracts out the widgets. ठीक है, अब हमने आपको decision tree के 2-3 examples दे दिए हैं. What I would expect from you as an instructor is to, you don't have to go out and look at, various different combinations and situations. If you do have the time, the luxury of time, please go ahead and do so. मगर at least जो presentation में जितने 2-3 examples आपके साथ share किए गए हैं, make sure you know how to solve them and understand them. Okay? So go out and redo them. Take a paper and a pencil. You need to solve them on your own. Just listening and hearing to it will not help you that much. याद रखिए, जो strategy का total number है वो हमेशा the sum of all the probabilities is always equal to 1.0. So that gives you that, an added advantage that when you add up the numbers, you know whether you're going on the right track or not. With that, all the best. अगले भी जो lecture में we will focus on the PMI's processes. So all the best to you, and I'll see you in the next lecture.